नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव और इंडिया डेयर्स में आपका स्वागत है। मैं खड़ा हूं अजय भवन के गेट के बाहर। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्यालय है और आज यहां पे एक मानव श्रृंखला बनाई गई। कुछ कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और एक प्रोटेस्ट किया गया दिल्ली दंगों के बारे में। प्रोटेस्ट पूर्णतः शांतिपूर्वक रहा, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया गया और सभी कार्यकर्ताओं ने मास्क पहने हुए थे। डिमांड्स ये थी कि दिल्ली सरकार एक अलग कमेटी बैठाए जो कि निष्पक्ष तरीके से दिल्ली दंगों की जांच करे और जो सही में दोषी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनको पकड़ा जाए। बुद्धिजीवियों, छात्रों, नौजवान एक्टिविस्टों को गिरफ्तार करना, झूठे केस बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सांप्रदायिकता हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। कम्युनलिज्म डाउन, 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 डाउन। कम्युनलिज्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, ये आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व अन्य वामपंथी पार्टियां जो दिल्ली राज्य की हैं, उन्होंने पिछले 5 दिन से पूरी दिल्ली में 1 लाख पैम्फलेट बांटे हैं और उस पैम्फलेट में भी हमने अपनी बातें रखी हैं विस्तार से। उसके बाद ये तय हुआ कि आज 3 तारीख को हम लोग जंतर मंतर पे एक विशाल प्रदर्शन करेंगे, पर पुलिस ने हमें कहा फोन करके कि इसकी इजाज़त आपको बिल्कुल नहीं दी जाएगी, कुछ भी हो जाए हम रिटेन कर लेंगे और उसके तहत फिर ये तय हुआ मीटिंग में कि सब लोग अपने अपने पार्टी कार्यालयों के बाहर या जिले में जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ पे शारीरिक दूरी के नियम को पालन करते हुए इस विरोध को करेंगे। इस विरोध को करने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, दिल्ली सरकार अपनी इंक्वायरी कमेटी बिठाओ, कमेटी बिठाओ। दिल्ली पुलिस, भारत सरकार का गृह मंत्रालय सांप्रदायिक नजरिए से जांच करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली पुलिस, भारत सरकार का गृह मंत्रालय निर्दोषों को गिरफ्तार करना, उन पर केस बनाना बंद करो, बंद करो, बंद। The Union government, Prime Minister Modi, took all steps to welcome Donald Trump. They did not care for COVID-19, Corona pandemic. They did not care. They did not care for the demands raised by Shahinbag people. Anti-CAA, you should understand, Citizenship Amendment Act. It was anti-constitutional. It is against Muslims, no doubt. It is also against to Dalits, Adivasis, backward class people, the poor people of the country. Our constitution given to us by Dr. Ambedkar makes it clear citizenship should not be linked with religion, but Modi government linked it with religion. That created an uproar all over the country, not only in Delhi. There were protests across the country in all states, but Delhi in the month of February, you all know, had elections. In the elections, BJP wanted to take advantage, polarizing the Delhi people, communalizing the issue, dividing the people on religious lines. They wanted to create Hindu-Muslim conflict in Delhi. You all should know there is a minister in Modi government, Anurag Thakur. He only spoke Goli Maro. गोली मारो सालो। Goli Maro. This slogan was given by the minister. All BJP leaders were making hate speeches, pitting one section of the people against other. That has led to Delhi riots. Now, as Comrade Dinesh said, the Delhi University academicians, they are being called for questioning. They are being
arrested under UAPA, that is Unlawful Activities Prevention Act, a draconian act, and they are being arrested under that act. Student activists are arrested, slapped under that act, and now many activists, known activists, are there on their list, and they are calling one by one. Today also, some activists have been called for interrogation. Why this is happening? Delhi has an elected government, but Delhi police is not under Kejriwal, you should understand. Delhi police is not under Sisodia. Delhi police is under the Home Ministry. It is under Amit Shah. But Delhi police is acting one-sidedly. Delhi police is acting at the biggest of union government. So we are demanding Delhi government, being an elected government, it should have its own independent inquiry. Delhi government should not abdicate from its responsibility. It should order an independent inquiry, and the Union Home Ministry should be impartial, and the Union Home Ministry should arrest those BJP leaders who are responsible for making hate speeches. These are the demands we are making. I congratulate all of you. I congratulate Secretary Dinesh Vashne for having organized this demonstration. Even though people think it is a small demonstration, but it conveys a large message, a big message that Communist Party of India, this large agenda will not remain quiet, and Communist Party of India, the large agenda will come on the streets, fight against Modi government, fight against Amit Shah rule, and we will defend the people and we will protect the democratic rights of the people. That is the message we are conveying. I congratulate all of you. I congratulate the Delhi State Unit. Thank you, Captain.